Hello and welcome to UPSC Scholar. Today we'll be discussing the current affairs from 17th of July to 23rd of July. We'll be covering it from the Indian Express newspaper and we'll be looking at it only from the exam perspective. So let's begin. My name is Sachin. Our first current affairs is from Polity. Rajasthan Minimum Income Bill. Recently, Mr. Ashok Gehlot tabled this bill in the Rajasthan Assembly. What is the main purpose of this bill? It is a guaranteed wage scheme for 125 days every year to cover the entire adult population. There would be this guaranteed employment for 125 days given to the entire adult population that is willing to work. And if somebody is not willing to work, the vulnerable population, the senior aged, the widows, the single women, so they will be getting 1000 rupees as a monthly pension. This is the basic purpose of this bill as of now. So there are these two schemes, Manrega and Indira Gandhi Shahri Rozgar Yojana. This is a local scheme of Rajasthan government only. It does not apply to all any other part of the country. So Manrega, as we all know, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranteed Act. So this gives 100 days of rural guaranteed employment. But this was only for the rural. So the Rajasthan government came up with this Indira Gandhi Shahri Rozgar Yojana, which also gave 100 days urban guaranteed employment, but only to the Rajasthan specifically. So now जो अभी मिनिमम इनकम बिल आया है इसमें क्या हुआ है कि गवर्नमेंट हैज एडेड 25 डेज फॉर द रूरल एंड 25 डेज फॉर द अर्बन। तो टोटल 125 डेज का ये प्रोग्राम बन चुका है और यहाँ पर साल में 125 दिन तक जो भी एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं काम करना, द विलिंग पॉपुलेशन, उनको ये गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। लेट्स लुक एट द मोर डिटेल्स ऑफ दिस बिल। देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बिल। द फर्स्ट वन इज मिनिमम गारंटेड इनकम, कि आपको गारंटेड इनकम पक्का मिलेगी। ईच अडल्ट टू बी गारंटेड अ मिनिमम गारंटेड इनकम फॉर 125 डेज का गवर्नमेंट ने इंतजाम कर दिया है कि 125 डेज तक आपको गारंटेड इनकम मिलेगी। एंड दोस्त जो कि वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, अबव 60 डिसेबल्ड वुमेन, दिस ऑल विल बी गेटिंग अ पेंशन ऑफ 1000 rupees per year, those who are unable to work. The second aspect of this bill is the guaranteed employment. The post the work in मनरेगा और दिस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, जिसमें भी आप काम करने के बाद आपको वेजेस जो हैं वो वीकली पे कर दिए जाएंगे। अगर वीकली नहीं भी होते तो नॉट मोर देन 15 डेज। अ स्पेशल ऑफिसर विल बी पोस्टेड टू सुपरवाइज दिस प्रोसेस कि आपको लेट वेज पेमेंट ना हो। और वर्क साइट जो है वो आपके विद इन 5 किलोमीटर ऑफ द रेडियस होगा, जहां पर भी आपका जॉब कार्ड बना है, आप जहां पर भी रहते हो। तो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, ये तो पक्का हो गया है। एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज द गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन। Senior person, persons with disability, widow, single women, these all shall be entitled to monthly pension of 1000 rupees with 15% increment also added as per the act, कि हर साल 15% इसमें इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। So this is it. This was, as of now, the Rajasthan is the first state even in the country, आज से पहले कभी ऐसा बिल नहीं आया है जिसमें मिनिमम गारंटेड इनकम हो। राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक बात करी थी कि गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट भी लाएंगे, ऑल्दो इट इज नॉट येट प्लेस्ड, सो वी डोंट नो व्हाट आर इट्स प्रोविजन। बट एक जो स्विगी जोमेटो और जो भी अर्बन कंपनी, इन सब में जो ऐसे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स काम करते हैं, इनके लिए भी, इनकी वेलफेयर के लिए भी कुछ ना कुछ ये लोग लाएंगे, ऐसा एक्ट एक कहा था। सो लेट्स लुक सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बिल, क्या हो सकता है। एज पर आरबीआई, राजस्थान इज वन ऑफ द स्टेट जिसके ऊपर काफी डेट है। देयर आर फिस्कल कंस्ट्रेंट्स विद द स्टेट अराउंड, आई थिंक 2500 करोड़ रुपीज विल बी स्पेंड ऑन दिस स्कीम पर ईयर। मेन पर्पस जो हम बेसिक, जो हमें प्राइमा फेसी जो पता चलता है कि द नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड, तो ये तो एक जेनरिक सा रीजन हो गया, बट लेट्स सी फिस्कल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। राजस्थान हैज अनाउंस्ड फ्रीबीज वर्थ 8.6% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 8.6 रुपीज की उन्होंने फ्रीबीज एज अ पीपल को बांट दिए। So what this thing also shows that there is inability in the economy.
इकोनॉमी इतनी अभी हमारी कैपेबल नहीं हुई कि दे कैन क्रिएट क्वालिटी जॉब्स। अभी भी लोगों को ये 125 दिन के रोजगार के लिए और जो छोटे मोटे वर्क्स होते हैं, डिगिंग द वेल्स और ये सब कामों के लिए अभी भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। दिस इज नॉट अ गुड साइन। if we are aiming as a if we are aiming to become a developed country, I think our economy should be able to create a quality jobs where people should be more focused and stable. They should have a job stability or their long term ki jobs ho. You 125 days job, these are not a long term jobs. So this is it. If there would be any update in this, I will update it next time. So as per now, it was this only. Next thing is Rule 176 versus Rule 267. See, this Manipur conflict and the horrific incident that happened at Manipur, we all know about it. I'm not discussing it because it is more of a political issue, and I don't think that anything related to our exam is present in that specific incident, so we won't be discussing it. But there is this clash happening in parliament regarding the discussion related to Manipur should happen in the parliament or not. So there was this issue, there was this debate happening in the parliament regarding Rule 176 versus Rule 267. What opposition wanted was they wanted to have a discussion under Rule 267, but the government agreed to have the discussion under Rule 176. So what are the details? What are the basics? Let's look at it. First thing is Rule 267 can only be introduced in Lok Sabha, can only be acted in Lok Sabha. What is it? Any member with the consent of chairman may move the motion to suspend the daily business of the house and have discussion on the issue of national importance. It can have discussion for more than 2.5 hours. That's why the opposition was wanting to have discussion, because it would have given more time for it, for the Manipur issue to be discussed. So basically 267 क्या कह रहा है? Suppose आज पहले से डेली बिजनेस पहले से पता लग जाता है कि राज्यसभा में आज क्या होना है। इट गेट्स अपडेटेड ऑन द वेबसाइट, इट इज ऑल नोन टू द मेंबर्स। सपोज करिए कल ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि इस मॉनसून सेशन में वैसे भी आने वाला है, कल वो डिस्कस होने वाला है। मगर सपोज करिए दिस मणिपुर इंसिडेंट हैपन टुडे, और कल एकदम से जो बिजनेस डेली बिजनेस ऑफ द हाउस है द ड्राफ्ट प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन बिल, मगर with the permission of the chairman, with the consent of the chairman, anybody from the opposition or the ruling party, they can move the motion under Rule 267 to suspend the daily business कि भाई आज draft protection bill, data protection bill नहीं discuss होगा, we will have the discussion on Manipur issue. So this is Rule 267. So you can have discussion for more than 2.5 hours. There is no voting, there is nothing, but सिर्फ एक discussion होती है. What is Rule 176? Any member desiring to raise a matter of national importance, public importance, may give notice to Secretary General with reasons and explanatory note, and it shall be supported by at least two other members. But discussion can't be more than 2.5 hours. That's why government was preferring this. बेसिकली जो एसेंस है दोनों का वो सेम है, बट देयर इज सम डिफरेंस इन रूल्स एंड दिस क्राइटेरिया। पहला डिफरेंस ये है कि भाई अगेन कोई भी मेंबर जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है वो डिस्कस करने के लिए इस मोशन को ला सकता है, और पब्लिक इंपॉर्टेंस इशू सेक्रेटरी जनरल को आपको पहले नोटिस देना होगा जो राज्यसभा के हैं, विथ रीजंस एंड एक्सप्लेनेटरी नोट कि भाई ये क्यों पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है जो आप डिस्कस करवाना चाह रहे हैं, और इट शैल बी सपोर्टेड बाय at least two other members, दो और मेंबर्स भी इसको सपोर्ट करने चाहिए, बट डिस्कशन कांट बी मोर देन 2.5 आवर्स। रूल 267 में 2.5 आवर्स से ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं आप लोग। सो दिस इज इट, बट दिस इज बी केयरफुल, दिस इज ओनली फॉर राज्यसभा। लेट्स सी, ऐसा ही 267 का ही रूल एक और जैसा एक मोशन लोकसभा में भी होता है, इट इज एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। It is the see, there is this debate going on कि Rule 267 और adjournment motion they all are same, but it is not. Rule 267 में you can't censor the Council of Ministers. Suppose adjournment motion अगर पास हो जाता है, adjournment motion अगर रूलिंग पार्टी के खिलाफ पास हो जाता है तो whole Council of Minister gets censored
They can't take any policy decisions. Government will have to face no confidence motion, or they will have to introduce the confidence motion by themselves, or 50 members write to the chairman, पहले 50 मेंबर्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इट इज क्वाइट, क्योंकि वहां पर भाई इट इज हाउस ऑफ द पीपल, इट इज मोर ऑफ अ वेरी ट्रस्टेड प्लेस। सो 50 मेंबर्स राइट टू द चेयरमैन, और यहाँ पर ओनली 2 मेंबर्स, यहाँ पे 2 लोगों से ही काम हो जा रहा है। तो जस्ट you can just know the importance of both the issue. This is more of a grave, और जब बहुत ही ज्यादा critical issues हो जाएं तब adjournment motion लाया जाता है। रूल 267 is just to have the basic discussion. Next thing, this was not anything much related to our exam, but there was this Mr. Naveen Patnaik from Odisha. Now he has become the second longest serving CM in our country. The first record is still being held by Pawan Kumar Chamle. He was the CM of Sikkim. Naveen Patnaik is from Odisha. He is presently serving, and the next one is from West Bengal, Jyoti Basu. Naveen Patnaik has broken the record of Jyoti Basu, and I think as per he is going all good. I think he might be soon taking the above position, because Odisha elections are also due next year, and he might be easily breaking this record and becoming in the first spot for sure. So he is the chief minister since 2000, and now it is 23 years. We are in 2023, and as per the prospects are looking, he might retain the power again next year. So this was the fact that I think we all should be knowing. It can be asked in a statement form of question also. So we should be knowing this. Recently, there was this exam in Uttarakhand, and it had this question. So just try if you can answer it. I will just pin the answer in the comments. Just try to answer this. Pause it and try to answer this. The next thing is new norms for senior advocate. What changes? Recently, there was some update for if you want to be a senior advocate. So there are some changes in the norm. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी तक जो गाइडलाइंस चल रही थी वो 2018 की गाइडलाइंस चल रही थी। इट वाज टू सीक ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और इन सब चीजों के लिए। इसमें क्या होता था, 2018 गाइडलाइंस में क्या कहा गया था कि जो सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है उसको बंद करा जाए। कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ सीजीआई एंड 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मेंबर, ये होने चाहिए उसमें। सो व्हाट वाज द वे ऑफ, जो मतलब 2018 गाइडलाइंस अभी भी चल रही हैं, है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें ऐसा कहा गया था कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, और एक कमेटी होगी जिसमें ये सब मेंबर्स होंगे। और क्या तरीका था कि सीजीआई और एनी अदर जज में रिकमेंड द नेम ऑफ एडवोकेट फॉर द डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट, जैसे कि एक कॉलेजियम सिस्टम में करते हैं। दे रिकमेंड द नेम, बट इट डज नॉट गो फॉर प्रेसिडेंट, और ऐसा कुछ अप्रूवल के लिए नहीं होता है, बस सीजेआई रिकमेंड करते हैं। या फिर एक तरीका और है कि एडवोकेट कुड आल्सो सबमिट देयर एप्लीकेशन दैट वुड बी इवैल्यूएटेड on the basis of their experience, age, legal practice. They can submit their application on the secretariat of the court. The candidate is then later, if selected, is also interviewed like all of us, and then it is given marks for years of practice and based on everything। मतलब जो जो उसके attributes होते हैं, जैसा उसका experience है, जैसा जैसा उसका अभी तक की प्रैक्टिस रही है, उसके हिसाब से पॉइंट सिस्टम कुछ होता है। हमें उतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बट पॉइंट सिस्टम कुछ होता है, उसके हिसाब से उसे पॉइंट्स मिलते हैं। क्या हुआ रिसेंटली कि सेंटर ने एक पिटीशन फाइल करी कि जिस हिसाब से पॉइंट सिस्टम चलता है तो उसमें मोर वेटेज दिया जा रहा था। जैसे अलग अलग एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया ना, कि आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी पब्लिकेशंस को, आपके कितने पब्लिकेशंस आते हैं न्यूज़पेपर में, इससे रिलेटेड इसको ज्यादा वेटेज दिया जा रहा था। सो सेंटर सेट की इट डाइल्यूटेड द एस्टीम एंड द ऑनर ऑफ द पोस्ट, क्योंकि जो भी ये जर्नल्स हैं और ये सब हैं, ये तो आप एक नॉमिनल अमाउंट देकर भी छपवा सकता है कोई भी। it is a very easy job, so why it should be, this attribute should be contributing this much on an applicant's application? तो इतना क्यों होना चाहिए? तो this was it, the
court accepted it, and the new changes are कि senior advocate should be at least minimum 45 years of age, and there is exception कि वो उससे कम भी चलेगा, बट इट इज एट वेरी रेयर सर्कमस्टेंसेस, उसके हमें डिटेल में नहीं जानना चाहिए, मगर मिनिमम 45 ईयर्स होना चाहिए। और जो भी उनका सिस्टम है कि मार्क्स अलॉटमेंट और पॉइंट्स विद सिस्टम, इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमी। Recently, Mr. Amit Shah launched the refund portal for the investors of Sahara Group cooperative societies whose money was duped in or whose money got stuck in the Sahara Cooperative Society or the Sahara scam. So this Sahara Refund portal was launched in there for depositors who had their money stuck in four Sahara Group cooperative societies. Here it is the name if you want to know it. And the first payment of 10,000 will be made, and then so on in few amounts. The whole amount will be paid to the investors back along with the interest. What was the Sahara issue? Like we'll just get to know it in a very brief, in a very short way. So Sahara, as we all know, if we go back to our childhood memories, हमने बचपन में देखा था इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के आगे बहुत बड़ा बड़ा सहारा सा लिखा रहता था। So what Sahara did was through this cooperative societies, जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं चार cooperative societies, they had taken money from people via OFCD, optional fully convertible debentures। debentures क्या होते हैं? bonds ही होते हैं एक तरीके से। बॉन्ड्स में आप पैसा लेते हैं उधार पब्लिक से, और उसके बदले आप उनको एक पेपर देते हैं कि आई विल पे यू आफ्टर दिस इयर्स विद दिस इंटरेस्ट। तो इसमें क्या था, ऑप्शनल फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या थे कि आइदर यू कैन चूज टू स्टे विद द डिबेंचर और यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू द इक्विटी। या तो आप सहारा के हमेशा एज अ क्राइटर बने रहिए, आपसे आपका पैसा हमेशा हमारे पास रहेगा जो भी उसका टर्म है, या फिर आप मालिक बन जाइए, या फिर आप इक्विटी इसको डाइल्यूट करा लीजिए, आप इक्विटी में आ जाइए। So this was the OFCD that were issued by the Sahara and their agents at that time all throughout the India. They collected a lot of money from people. So through which, so this all happened. Say Sahara collected the money, but CB की थोड़े टाइम बाद ऑब्जेक्शन आई। They claimed that it is under their jurisdiction. सेबी, जो कि हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि सारी सिक्योरिटीज के लेन देन को देखता है। So they objected that why Sahara has not taken permission from it. Sahara said this is an hybrid issue. This is neither stock market related, this is neither bond related. और हमें जहाँ कंपनी रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी थी हमने वहां से ले ली है। We don't need to take permission from SEBI. CB said, no, you should have taken permission from us. So after which the matter went on to Supreme Court, and after a long very litigious issue, जैसा कि हमारी जुडिशियल सिस्टम में होता है, काफी लिटिगेशंस और काफी टाइम के बाद आई थिंक सहारा का ये डिसीजन आया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द रिफंड ऑफ द ड्यूज एंड सेटिंग अप ऑफ दिस सहारा सेबी रिफंड अकाउंट। तो सहारा जो है वो सेबी को पैसा देगा, सेबी विल गिव इट टू द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड दैट विल गिव बैक टू द पीपल थ्रू दिस रिफंड पोर्टल। सो दिस वाज इट, मैंने काफी ब्रीफ में बताया। अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं एवरी डिटेल, एंड आई डोंट थिंक इट इज एज इम्पोर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, बट ये इसका मेन जो क्रक्स था ये था। सो नेक्स्ट थिंग इज India and UAE sign pacts on the local currencies in trade and IT campus. India and UAE relations, we all know we have a very good relations with UAE. UAE is our second largest trade partner, and what has happened is तीन चीजों पे हमारा ये एग्रीमेंट हुआ है, पैक्ट हुआ है। पहला हुआ है कि इंडिया एंड यूएई हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ आईआईटी कैंपस एट अबू धाबी। इससे पहले हमने पढ़ा था जो हमारा पहला ग्लोबल कैंपस होगा दैट विल बी इन तंजानिया ऑफ आईआईटी मद्रास at to be precise Zanzibar, and we had discussed it in the last videos. So पहला इशू ये था कि हमारा आईआईटी कैंपस बनेगा अबू धाबी में। द सेकेंड थिंग वाज कि लोकल करेंसी पैक्ट हुआ है आपस में। इट इज टू इंटरनेशनलाइज द रुपी, रुपी का जो इंटरनेशनलाइजेशन है, ज़्यादा इंटरनेशनल जो हमारी पेमेंट्स और ट्रांजेक्शन है उसमें यूज हो, एंड टू ब्रिंग डाउन द डिमांड ऑफ डॉलर, डी डॉलराइजेशन जो एक ओवरऑल वर्ल्ड में ट्रेंड चल रहा है। अभी न्यूज चल रही थी कि ब्रिक्स भी शायद अपनी एक ग्लोबल करेंसी लाए। तो इस वजह से प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स, इस वजह से लोकल करेंसी पैक्ट हुआ है।
द थर्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ द पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम्स। हमारा यूपीआई है और उनका आईपीपी है यूएई का, इस इनको इंटरलिंक करा गया है। These all processes will also facilitate the comprehensive economic pact that happened last year between India and UAE. Not last year, this year only. So this will also facilitate it. So one more news is related to that only. Local currency settlement system. Importers and exporters will be able to invoice and pay in their local currencies. इंडिया के importers और जो यूएई के exporters हैं, they'll be able to trade in their local currencies, which will help in the development of AED and INR का जो forex है, it will also help in this. AED is Arab Emirates Dirham. तो what will happen, इससे क्या होगा कि हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बचेगी। इट विल ऑल्सो रिड्यूस द सेटलमेंट टाइम फॉर द रेमिटेंसेस। इससे पहले क्या होता था कि अगर सपोज आप डॉलर में ले रहे हैं तो आप डॉलर में पे कर रहे हैं यूएई को, क्रूड ऑयल सपोज कर लीजिए, तो आप क्रूड ऑयल डॉलर में पे कर रहे हैं, देन जो वहाँ का जो एक्सपोर्टर है वो डॉलर को अपने दिरहम में कन्वर्ट करेगा। तो इस बीच में ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफी आती थी फॉरेक्स को एक्सचेंज करने में और इन सब चीजों में, और टाइम भी काफी लगता था। मगर अभी लोकल लोकल करेंसी से होगा तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज। इट विल सेव अवर फॉरेक्स रिजर्व्स, हम रुपी में पेमेंट कर पाएंगे। इट विल हैव स्टेबिलिटी अगेंस्ट डॉलर शॉक्स। रिसेंटली लास्ट ईयर एंड दिस ईयर ऑल्सो द डॉलर increased, and or you can say कि अवर करेंसी depreciated against डॉलर। तो डॉलर शॉक से ये हुआ कि हमारे इंपोर्ट्स काफी महंगे हो गए। देयर वाज दिस कंसेप्ट कॉल्ड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जिससे कि हम बाहर की चीजें जो भी हम फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर से खरीद रहे थे वो सब चीजें महंगी हो गई, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हुआ इंडिया में। तो इस डॉलर शॉक से हम बच सकते हैं। तो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम ये हमने रशिया के साथ करना चाहा बट इट डिडंट सक्सीडेड रियली वेल, क्योंकि हम इंडिया रशिया से खरीदता तो बहुत है, मगर रशिया कुछ नहीं खरीदता है हमसे, उतना नहीं खरीदता है। सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ इंडियन रुपी पेंडिंग ऑन द अकाउंट्स। हम तो इंडियन इंडिया और रशिया, तो हम इंडिया वाले तो कर सकते हैं रशिया से ट्रेड, क्योंकि हम बहुत सारा क्रूड ऑयल खरीदते हैं, वेपन्स खरीदते हैं, सब चीजें खरीदते हैं, बट रशिया नहीं खरीदता है। रशिया हमारे इतने सारे रुपीस से क्या करेगा। So this was it. This is the problem with the trade surplus countries, जहां पर भी हमारी ट्रेड सरप्लस है, हमारी ज्यादा है और वो लोग कम खरीदते हैं। So this is the main issue. Suppose there is like India and Bangladesh. There is total like 14 billion of trade between India and Bangladesh. Bangladesh imports around like 12 billion from India, but India imports from Bangladesh like approximately 2 billion. बांग्लादेश 12 बिलियन हमारी कंट्री से ले जाता है, तो दे विल बी पेइंग इन द बांग्लादेशी टका। 2 बिलियन दैट वी इंपोर्ट फ्रॉम देयर कंट्री विल बी पेइंग इन द इंडियन रुपी। जो डिफरेंस बचेगा 12 बिलियन टकास का, वो हम उनसे क्या करेंगे। दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट अकर्स बिटवीन द लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। हमारे पास एक्स्ट्रा उनके रिजर्व्स पड़े रहेंगे। ऑल्दो वी कैन से कि लॉन्ग टर्म में तो ट्रेड कभी खत्म नहीं होने वाली है, काम ही आता रहेगा, बट इतनी ही ट्रेड रहेगी तो ऑब्वियसली बात है ना कि स्टॉक पाइल ऑफ दिस कैश वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग। दैट विल बी लाइक टोटली यूजलेस। सेम इज द इशू दैट इज हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज। रशिया के साथ भी ये इशू आ रहा है, अ लॉट ऑफ इंडियन कैशेस ऑन देयर वोस्त्रो अकाउंट्स, बट they are not able to use it. They don't buy that much from India. So this is the problem that will be coming from the trade surplus country. The talks in the town are कि हमारा श्रीलंका से, आने वाले टाइम में बांग्लादेश से, अफ्रीका की भी काफी कंट्रीज से ये सब लोकल करेंसी एग्रीमेंट होने वाले हैं। बट द थिंग इज लाइक वी विल हैव टू अडॉप्ट अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। जो भी हमारे एग्रीमेंट्स होंगे विल हैव टू लुक अपॉन इट कि हम कैसे जो डेफिसिट और जो ट्रेड सरप्लस में जो दिक्कत आ रही है हम इसे कैसे टैकल करते हैं। एंड इन लास्ट एक हमारा मैसेज और जाएगा जीसीसी कंट्रीज को, जो कि मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं और जहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा भी प्रेजेंट है। दे सेंड अ लॉट ऑफ रेमिटेंसेस बैक टू द इंडिया, कि ये सिस्टम आप लोग भी अपनाइए, विच इज रियली हेल्पफुल एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट अवर इंडियन कम्युनिटी लिविंग देयर इन सेंडिंग द रेमिटेंसेस। So this was it as for now, and
UPI, I would say कि UPI is currently in lot of news. Recently in France also it was adopted and in UAE also. So I think it has a very good scope for our economy in the coming years, and it will be spread all over throughout the Gulf Cooperation Council and these all small countries. It will lead to a rapid rise of India's fintech also. So this was it. The next news is India plans to build the strategic gas storage as a hedge against volatility. नेचुरल गैस रिजर्व्स आज जस्ट लाइक क्रूड ऑयल रिजर्व्स हम क्यों बनाते हैं? कभी डिसरप्शंस हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, कुछ सप्लाई डिसरप्शंस हो जाए, जैसे रिसेंटली हुआ था ना पिछले साल, नॉट टू पाइपलाइन लीक हो गई थी द बिटवीन रशिया एंड जर्मनी. सो why is government planning to do this natural gas supply? The gas consumption is expected to grow in the upcoming years. We are currently the net importer of the gas. It might increase from 15%, it might increase up to 15% from 6%. तो हम अभी नेट इम्पोर्टर हैं और आने वाले टाइम में सपोज कुछ भी ऐसे वॉर्स हो गई हो, कुछ भी हो गई, तो वी ऑलवेज नीड अ इमरजेंसी और एज अ सेफ स्टोरेज सप्लाई. तो हम कहाँ पे रखेंगे? जैसे हमारे क्रूड ऑयल है उसकी तरह ही हम नेचुरल गैस को भी स्टोर कर सकते हैं एबंडेंट गैस वेल्स में, अंडरग्राउंड स्टोरेज में, एक्वीफायर, सेल कर्बन्स, जो कि टेक्नोलॉजी क्रूड ऑयल्स के लिए भी ढूंढी जा रही है नियर राजस्थान एंड दिस एरिया. तो इस वजह से ये सब अभी न्यूज़ में है. ऑल्दो यू कैन सी दैट द आइडिया इज स्टिल एट द प्रिलिमिनरी स्टेज एंड a lot of players have been approached to develop this proposal. तो अभी यहाँ पर ये भी कंफर्म नहीं है कि स्ट्रेटजी जो ये गैस स्टोरेज बन रहे हैं गवर्नमेंट खुद बनाएगी या प्राइवेट सर्विसेज या प्राइवेट सेक्टर को देगी. तो अ लॉट ऑफ थिंग आर नॉट सर्टेन बट दिस वाज जस्ट द आर्टिकल सो आई जस्ट थॉट कि आई शुड बी इंक्लूडिंग इन दिस. Let's see the basic difference between what is the CNG, LNG, and the LPG. CNG is natural gas. It consists of methane. LNG is also consisting of methane. What LNG is, it is liquefied natural gas. CNG को बहुत ही extreme cold temperatures में इसको compress करा जाता है जिससे कि वो condense होकर liquid बन जाती है and then it turns into a liquid natural gas. It also consists of methane, whereas as compared with liquefied petroleum gas, it consists butane. And the major one of the major differences, the CNG and this natural gas, this all is transferred through a pipeline. But जो LPG हम consume करते हैं, it can be stored in a cylindrical form and this kind of thing. So these are some major differences between the this gas sectors and this gas thing. The next thing is India recently banned the rice exports, and it has created a lot of chaos all around the world because India is the largest exporter of the rice in the world, about 40%. And India has banned the non-basmati rice. Basmati, as you all know, is a quite kind of a, like a very premium rice. It is quite expensive. But India has banned the non-basmati rice, which consisted of 80%. 80% of Indian exports. अगर 80% इंडिया का एक्सपोर्ट जाता था, obviously बात है, it would create a lot of chaos all around the world. US, Thailand, Vietnam, Pakistan, US, Myanmar, these all exports, these also export, but still they can't fill the void. अगर एक major जो 40% का gap आ जाए तो obvious सी बात है there would be a huge shortage all around. The first thing is why we have done is we all have our domestic supply concerns. हमारा domestic inflation अभी recently में बहुत बढ़ा है. You all would have seen कि vegetable inflation और इन सब में retail inflation फिर से थोड़ा सा बढ़ा है. It is still not in hands totally, although it has decreased a lot as where it was in the last year, but still आपने देखा होगा recently tomatoes, vegetables, a lot have increased suddenly. So that is why domestic supply concerns. So the second thing is we had also banned last year, we had banned wheat, broken rice, sugar. These all they were under export bans. So the retail inflation is, see, I have told you this point, retail inflation is still not completely under the control, and there is very subnormal monsoon season. El Nino has returned after the 3 years. So this also raises the questions about India's credibility. The first thing is, according to the Ministry of Agriculture estimates,
the production has been an all time high. अगर ये सब all time high में है हमारे राइस प्रोडक्शन और ये सब चीजें, तो what was the need of banning it? And the second thing is, after this thing, we won't be able to become a very reliable supplier. We might become a very unpredictable supplier. Although गवर्नमेंट का भी रैशनल सही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि we first should look at our people, India first obviously, but the this इसके बदले क्या करा जा सकता था कि you might have reduced the quantity slowly. आप अगर आप बैन लगा रहे हैं तो you should have कि इतना इतना परसेंट बैन लगेगा, पूरे you should not be completely banning this thing. So this dilutes our image as a reliable supplier all around the world. Let's take an example of a crude oil. अगर जो गल्फ नेशंस हैं और वो कम दे नेवर completely ban the product, है ना, they are the top most oil producing states, the countries, but they will always cut the supply, they will always cut the production, but they will never ban it. That's why they are very reliable. Even at the worst time, they always keep the supply going. So this is what we can learn from other countries, and we should, if we want to emerge as a global supplier, then we should not be doing this bans instantly, and because this raises questions on India's reliability also. So this is it. The next thing is, so yeah, there was this article that has created the chaos. The only one rice bag per family notices have been put on the US markets and the US Walmarts and this all stuff. Empty shelves mark US stores after India curbs export. I'll be pasting this article link on the description. You can read it if you want. There was this tweet at the Indian store today for spices. I checked to see if rice prices went up due to export ban, but this was the result. Only one rice per bag, and that too per family. So this is why a lot of chaos has been created all around. The next thing is, recently Ranil Wickremesinghe visited India since last year, since the economic crisis and the turmoil happened in the Sri Lanka last year. So he has visited his first visit after that. So there has been some pillars on which there have been some agreements. Let's look into it. The first thing is maritime connectivity. The India will help in the development of the Trincomalee, the Colombo project, and the Kanken Sadhurai. So we'll help and ensure that the connectivity issue and this all are solved. तिनकोमैली में तो हमारी जो ओनरशिप भी है 49% हमारा इंडियन कंपनी है और 51% वहाँ की श्रीलंकन ऑयल कॉरपोरेशन से हमारा है. So we will be consolidating the regional logistics and the shipping. And there is some news that we will also be resuming ferry services between some two parts of this country. I don't know the name exactly, but yeah, this all thing will also be happening. The second pillar was energy and power. A high capacity power grid interconnection to be established between India and Sri Lanka, and later on that might be also spread to other regional countries. So this BBIN initiative was also in news. भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया नेपाल इनिशिएटिव, जिसमें हम एक एक जो कॉमन पावर ग्रिड होगी उससे हम एनर्जी शेयर करेंगे. एंड द सांपर solar power plant will be set up. It will be in Sri Lanka, and a multi-product petroleum pipeline will also be established. The third thing is air connectivity. The Chennai Colombo flight services, there would be resumption. And the fourth is financial connectivity to enhance the bilateral trade and operationalize the UPI based payment for enhancing trade and transactions. एक और कंट्री जिसके साथ हम यूपीआई अपना इनेबल और शेयर कर रहे हैं, इससे पहले फ्रांस, यूएई, नेपाल, सिंगापुर, हमने ऑल ओवर वर्ल्ड ऑलमोस्ट स्प्रेड कर ही दिया है यूपीआई को. The next article is also related to India and Sri Lanka relations only. This was an editorial. So India is emerging as an alternative for China. Manufacturing is picking up, trade pacts are happening with a lot of countries worldwide. So we are picking up in the race. So we had also given this 5 billion aid to the Sri Lanka during this their balance of payment crisis that happened to the Sri Lanka country last year.
and the IMF package was 3 billion, and that was given this year to the श्रीलंका, बट हमने पहले ही 5 बिलियन का एड उन्हें प्रोवाइड कर दिया था. Sri Lanka is crucial for India. Good relations with Sri Lanka also helps India keeping China at bay, maintaining the regional and the security and the stability of the region. So the article, the author has said that we need to take these 5 steps to improve India and Sri Lanka relationships. The first thing is, जो अभी recently the author want to say कि जो अभी recently हमने aid provide करी थी श्रीलंका को, they were supplied from different ministries. But rather than India should have a something like a China Development Bank or a Japan Bank for International Cooperation. तो ये सब जब भी कुछ भी ऐसा क्राइसिस होता है तो चाइना डेवलपमेंट बैंक है वो पूरा कोई भी कंट्री को वहां पर एड प्रोवाइड करनी है तो दे सप्लाइड फ्रॉम अ वन सोर्स. देयर इज वेरी इंटीग्रेटेड थिंग. तो हमें भी एक ऐसा इंटीग्रेटेड बैंक बनाना चाहिए जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो भी इन कंट्रीज इन नीड है हम जिनको भी एड देते हैं तो rather than coming from the different ministries they should be coming from one place only. The second thing is we should be improving our supply chains and making a trade zone area, coming more private investment in Sri Lanka and eventually an FTA with Sri Lanka. Private investment, we all know there is our Adani Group. Tata is also investing in Sri Lanka. So we should be improving our supply chains. This is what the author wants to say, and this will help. Sri Lanka will gradually integrate into India's emerging supply chains. अगर इंडिया की supply chains बहुत robust हो जाएंगी, stable हो जाएंगी, it will be attractive too, because South Asian countries में क्या है कि labor भी काफी सस्ता है, तो India would also get benefit from this. So what we need to do is we need to invest in our infra, we need to invest in our trade and transport, the logistics, and South Asia might develop as an export processing zones, and India might lead it. So there will be these industrial clusters all around. एक बहुत अच्छी well oiled supply chains होंगी हमारी. So India is also embarking on a lot of trade agreements all across the world, and after which eventually एक FTA श्रीलंका से भी हमारा बनता है. So this is what author want to say. The third is Sri Lanka should, as soon as possible, they should be adopting the digital infra, that is UPI. India has spread it across the world, in Europe, in Gulf countries, in the Singapore region. So, but we have not spread it to our very near neighborhood only, Singapore में हमने कर दिया है और मगर श्रीलंका में हम अभी तक नहीं कर पाए. सो वी शुड बी अडॉप्टिंग इट. एंड जैसे कि हमने देखा था कि देयर शुड बी अ डीपर एंगेजमेंट बिटवीन द आरबीआई, आवर आरबीआई एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नेंस ऑफ द श्रीलंकन सेंट्रल बैंक, जिससे कि जो भी क्राइसिस होता है और वो सब होता है वो मिटिगेट करा जा सके और कोई भी आने वाली परेशानी है उसको लेकर डिस्कशंस हो सके, एक रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे. सिर्फ श्रीलंका के साथ ही ना हो, और भी जो डेवलपिंग नेशंस हैं और जो भी स्मॉल नेशंस हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सब के भी सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का एक ऐसा फोरम बने जिससे कि हम इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स एक दूसरे की शेयर हो. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट important थिंग इज सिक्योरिटी. China's presence in Sri Lanka is India's concern because China has a lot of investment. China has given a lot of debt to Sri Lanka. So Sri Lanka owes a lot to China. That is why China has a very free access to Sri Lanka. वो जब चाहे अपनी शिप लाकर वहाँ के पोर्ट में खड़ी कर देते हैं, the research ship के नाम पर. और and we all knew how India was deeply concerned with it, and it was a spy ship or not, we don't know. But China has investment of 18% of Sri Lanka's GDP. So that is why इसको ऐसा चाइना को ऐसा स्पेशल एक्सेस मिला हुआ है. So what can be done is, in order to have more stability, there is one Colombo Security Conclave also, between the national security advisors of this country, and we should be indulging in more maritime exercises. There is this exercise called Slynex that happens between India and Sri Lanka. So this all can lead to the presence of India around this Indian Ocean region and the Sri Lanka region also. This was it.
So next thing is again an international relations editorial. Delhi is raising the game. So what the author want to say in this is I'm telling you the synopsis of it. कि our foreign policy is now having an integrated view as compared to before, जहाँ पर हम एशियन पावर्स जो हमारी एशिया में हम ग्लोबल पावर्स को आने से रोकते थे, ग्रेट पावर्स को आने से, ताकि एशिया में पीस बना रहे। मगर अब ऐसा नहीं हो रहा है। वी आर एक्टिवली engaging with both our regional partners in Asia, and we are also having great partnership with the great powers in Asian continent also. So recently, so let's look into the article in the detail. Recently, see, the first thing is India is realizing its importance of the blend of the Western power and the regional balance is best for its interest. The first thing is recently our Prime Minister went to USA, India and USA, but when he came back, he also went to Egypt. It showed that we also cared for African region, our regional region. When Indian Prime Minister went to France recently. So it he also when while he was coming back, he also just went to UAE also. So it also shows our interest in Gulf Council, Gulf areas also. It also showed our interest in African region also. So not only this, when this all was happening, our External Affairs Minister was also engaging with ASEAN, Mekong Ganga Council, BIMSTEC countries, all their forum. They were engaging with it. So both the trips that happened, whether it was India or USA or whether it was India or France, our neighborhood was actively discussed. With France, we discussed Indo-Pacific stability, कैसे हमने उससे स्कॉर्पियन क्लास लिए हैं और when the France, it was pulled off from that AUKUS deal and that nuclear submarine deal, and UK and US went into that deal विद ऑस्ट्रेलिया, तो तब से फ्रांस के लिए एक वैक्यूम बन गया था इंडो पैसिफिक रीजन में। इट हैड नो पार्टिसिपेशन, बट आफ्टर दैट स्कॉर्पियन सबमरीन्स और इंडिया के साथ वो पार्टनरशिप करने के बाद से ही हैज कम बैक, द फ्रांस हैज कम बैक टू द इंडो पैसिफिक रीजन आल्सो। And also in 2018, we broke our an exception that we won't allow any great power to indulge in the Indian Ocean region and this region. But हमने इसके बाद 2018 में we broke this rule for France, and now we are engaging actively with it in the Indo-Pacific region. India and France are also willing to work with the regional small associations around the Indian Ocean region that are there. See, the France has said that we are willing to work in the South Asia, the Southeast Asia region, the Indian Ocean region very actively, and they have also promised to boost the cooperation with the regional partners and the small associations like Indian Ocean Regional Association, Indian Ocean Commission, ASEAN Nation. It is Indian Ocean Rim Association. It has 23 members. So Indian Ocean Naval Symposium. So these all are the associations. इनके साथ भी फ्रांस काम करने वाला है. And the second thing was USA. USA के साथ भी जो think कि Indo-Pacific was common, but USA said that we will involve or we will indulge in Indo-Pacific via Quad. We will because Quad के through we want to tackle the China in the Indo-Pacific. है ना, इन यूएसए के भी कभी कमिटमेंट्स है वहां पर, तो इस वजह से यूएसए विल टैकल द इंडो पैसिफिक एंड द चाइना via quad, and they have also said that we will also be indulging, will be also involving the discussions with all these associations again. So this is not business as usual. This is unique because before it was considered that big powers should not be included in the region in order to maintain peace. पहले हमारी foreign policy ऐसी थी, although आती थी, although great powers used to come here, they used to actively engage with the Asian nations, but हमारा जो नजरिया था foreign policy का वो यही था कि हमें great powers को Asian region में नहीं लाना है. We want to maintain the peace, so that's why we won't be indulging with them. बट वहां पर उस टाइम पे द न्यू दिल्ली नीदर हैड दैट पावर टू स्टॉप द ग्रेट पावर्स फ्रॉम कमिंग इनटू द रीजन. ये आइडिया चलते थे कि एशिया
for Asians, and Indian Ocean security without the superpowers. These ideas continued to dominate the Indian thinking, बट इनमें हमें काफी बार कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला. दिल्ली ऑल्सो इंसिस्टेड ड्यूरिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जब हमारा चल रहा था कोल्ड वॉर के टाइम में, जिसमें हमने किसी के साथ भी अलाइन नहीं करा था, कि कोई भी फॉरेन मिलिट्री का बेस हमें अपने नेशनल सॉइल में नहीं चाहिए. सो दिस वाज ट्रूली नॉन अलाइनमेंट, कि हम किसी भी फॉरेन मिलिट्री को सपोर्ट नहीं करते हैं, एंड वी वोंट हैव एनी बेस इन द नेशनल सॉइल. मगर बहुत से नेशंस ऐसा नहीं कर पाए, एंड बिकॉज इट वायलेटेड द एसेंस ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि कोई भी सॉवरेन है, वो जब उसके ऊपर आएगी तो ऑब्वियसली ही विल बी प्रोटेक्टिंग इट रेदर देन प्रोटेक्टिंग इट्स आइडियोलॉजी, इट विल बी प्रोटेक्टिंग इट्स पीपल. तो दिल्ली ने भी इग्नोर करा, बट द थिंग्स चेंज्ड आफ्टर 1991 when India opened to the world, and also the Cold War stopped after the 1990. So it opened up again with the big powers, है ना. हमारे साथ जो लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, हम एशियन कंट्रीज के साथ भी एक्टिवली इंगेज करने लगे. 1991 के बाद तो बहुत ही ज्यादा करने लगे, उससे पहले हम नहीं थे इतने. We give higher priority to the new international economic order that was going to set up in the UN and the NAM forums. हमारा नया फोकस था कि हम ट्रेड बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं. जो कनेक्टिविटी है जो अभी तक नहीं हुई है हमारे 1990 से पहले तक, वो उसे और आगे को बढ़ाएं. दिल्ली also break the unstated rule. See, I'm reading from here. By unstated rule of keeping political distance from the major powers by joining hands with Moscow. क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि हमें एक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चाहिए था जिसमें सिर्फ यूएस डोमिनेट करे, एक सुपर पावर हो. we joined this multipolar world forum through Russia India China forum RIC, later जो कि ब्रिक्स बना. एंड द मल्टीपोलर क्वेस्ट, जी आई हैव टोल्ड यू कि यूनिपोलर ना बने. यूएस के, क्योंकि कोल्ड वॉर में यूएस के पास थोड़ा सा एज था, यूएसएसआर तो टूट गया था, तो यूएस के पास जो एज है उसके थ्रू यूएस ही सुपर पावर ना बन जाए, यूनिपोलर वर्ल्ड ना बन जाए. तो इंडिया ने ये भी रूल अपना ब्रेक करा, एंड दे जॉइंट द रशिया एंड चाइना फोरम ऑल्सो टू कीप अ थर्ड. और यूएस को भी लाइक आउट ऑफ देयर बैकयार्ड सब कुछ बैलेंस रहे. आई विल टेल यू द फाइनल टाइटल दैट आई वांट टू गिव टू दिस आर्टिकल. और फिर रिसेंटली जो हो रहा है कि अभी चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो हमने अब फिर से यूएस की तरफ को थोड़ा सा इंक्लाइन कर लिया है. वी हैव जॉइंड द क्वाड, वी हैव जॉइंड द ITU2 फोरम. वी हैव सी, अगर हमारी चाइना के साथ प्रॉब्लम अभी भी बढ़ती हैं, एससीओ में बढ़ती हैं, ब्रिक्स में बढ़ती हैं, क्योंकि उन सब में तो चाइना डोमिनेट करता है. चाइना एज अ ह्यूज इकोनॉमी, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना डोमिनेट करता है इन फोरम्स में. तो हमें ये भी पता है कि हमारी अभी करेंटली वेस्टर्न पार्टनरशिप्स और वेस्टर्न पावर्स के साथ हमारा इंगेजमेंट बहुत ही अच्छा है. तो हम वहाँ पर हम वी विल बी, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी इंक्लाइंड है कि अगर हमारी एससीओ और इस तरफ परेशानी होती है तो हम वहाँ की तरफ को ज़्यादा इंक्लाइन करने लग जाएंगे. See, it is also evident that the salience of the Indian strategic partnership with the Western power is rising, comparing to its engagement with Russia and China. So the thing is that Delhi is now taking a very integrated view of its interest. बहुत ही integrated view लेकर चल रहे हैं हम अपनी foreign policy में, and we are looking at everybody's interest, but before that we are looking at our interest also. हम सभी के साथ, as recently Jaishankar said, like he was in the Southeast Asian Leaders Forum. So Quad is complementary to the efforts of the ASEAN and the institutions led by it. As India becomes a major economic entity with the significant geopolitical heft, its ability to shape the intersection between its extended neighborhood and the world will rapidly grow. आशियान जो भी एफर्ट्स कर रहा है, उसके क्वाड के जो एफर्ट्स है वो भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना. इट इज म्यूचुअल, इट इज असिस्टिंग टू द एफर्ट्स ऑफ द आशियान. So this was it, and if I have to give the title to this article, I would give this article the title द बैलेंसिंग एक्ट. क्योंकि हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग प्रिसाइसली एंड परफेक्टली across the world in our foreign policy. The balancing act would be the right thing. Next thing is
Facing a future of drought, Spain looks to Moors for a way out. With this thing, Acequias, I don't know if I'm pronouncing it right, but as I saw in the internet, it was something like this only, Acequias. It was created by Moors over 1000 years ago. ये क्या है? ये community channels हैं of water. Like जैसे if you would have noticed, like in regions around Uttarakhand, Himachal, and these all regions, there's a small community channels that flow all throughout from the mountains to the hills and the plains area. Not a river, but a community channel, a community stream. तो उस वजह से जो created by Moors over 1000 years ago, community irrigation canal which work as a tool to preserve and share scarce desert water to the farthest region. काफी लंबे लंबे regions तक ये ऐसे क्यूआस बने रहते थे. I will be attaching a documentary link in the description and also one video above here, so you can watch it. You will get more, no, you'll get to know more about it. So जब लेट 60s आया तो तब रिजर्वियर सिस्टम अडॉप्ट करने लग गए थे लोग नियर स्पेन. इट इज राइट नाउ इट इज हैपनिंग इन स्पेन, बट इट इज वेरी प्रेवलेंट इन मेक्सिको ऑल्सो. तो जब वो आया तो रिजर्वियर सिस्टम अडॉप्ट करने लग गए थे लोग लेट 60s में, और एसेक्वियास टोटली इट गॉट फेडेड अवे, इट गॉट डिसअपीयर्ड. इसका फायदा क्या है कि इट स्लो डाउन द वाटर स्पीड फ्रॉम द माउंटेन्स. माउंटेन से काफी तेज एकदम फ्लो पानी आता है, उसको वो प्लेन्स में जाते जाते काफी रुक जाता है. इट स्लोज डाउन, इट लीड्स टू मोर रिटेंशन एंड मोर डिस्ट्रीब्यूशन. द चैनल इधर भी बांट सकते हो आप, इधर भी बांट सकते हो. यू कैन जस्ट सेंड इट टू डिफरेंट फार्म फील्ड्स, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट provinces. It is very low cost and it is effective for mitigating drought also. So Moors were basically the Muslim community at that time that ruled it, and it is Iberian Peninsula. That is one place that is written in this article. This is near the Spain and the Portugal region. The next thing is also related to something same, related to mitigating the drought and the flooding thing. And the thing is कि ये इंडिया में हो रहा है. So first of all, let's look at the basic of it. The Amrut 2.0 mission is in news. Although the main mission was started, the simple Amrut was started in 2015. The second part was released in 2021, I think. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. It was under Ministry of Housing and Urban Affairs. What were its purposes? Making cities self-reliant and water secure, providing universal coverage of sewer and septage management. What we are going to do is we need to focus on flooding and groundwater. So we are trying to revive the, like the जो बंद पड़े हैं, जो बोरवेल्स, द स्टेपवेल्स, द एक्वीफायर्स, हम इनको फिर से रिचार्ज करेंगे, फिर से रिवाइव करेंगे. And what is the main use of it? To recharge the groundwater as well as to mitigate the flooding. रिसेंटली आपने देखा होगा काफी शहरों में फ्लडिंग हुई. तो ये जो होते हैं, दीज आर ऑल द मिडीवल टाइम सॉल्यूशंस. एंड जो भी फ्लडिंग होती है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो इनमें जाके कंटेन किया जा सकता है, जिससे कि जो हमारी सिटी एरिया है वहां पर पानी जमा ना हो. तो दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ वेरी गुड ड्रेनेज सिस्टम. And aquifers, they help in recharging the groundwater. Our groundwater is also not getting recharged properly because of improper rainfall and improper rainfall and these all stuff. So that is why aquifers are also included in this. If you know Stepwells, there are, if you live nearby Delhi, there is something called Agriset Ki Bauli, and there are Rajaon Ki Bauli, some kind of that thing. And there is a one UNESCO World Heritage Site also in Gujarat, if you can remember. That is Rani Ki Vav. It is also a step well only. So these all are the things, and let's see if there will be any update. I'll update it. But right now it is happening around Rajasthan and Gujarat area only. Rajasthan, Jaipur, Gwalior, MP, Kolkata. These all areas are under. This is a pilot project. If it will be successful, it will be done in other parts of the country also. Next thing is why Kuno cheetahs are at an extra risk due to radio collars. See, this is the thing, radio collar जो इनके गले में बंधा रहता है. And you would have know the project cheetah has not taken off
the way we expected it to take off, and a lot of cheetahs have died, and the reason is currently uncertain. The first thing is जो अब the problem with the collars is जब आप बहुत देर तक किसी चीज को पहने रहते हैं, even if you wear a wrist watch for long, it will have bacteria inside it due to the sweat and everything that comes with it. Due to that, जो उसका कॉलर का जो होता है, जो उसका स्ट्रैप होता है, उसकी वजह से भी डोमेस्टिक पेट्स आपने देखे होंगे अगर आपके घर में डॉग्स हैं और वो हैं, ड्यूरिंग द समर टाइम दे डेवलप दिस रेड स्पॉट्स ऑन देयर स्किन्स, है ना, रेडनेस हो जाती है, उससे उनको इचिंग होती है, सम काइंड ऑफ अ डर्मेटिस काइंड ऑफ अ थिंग. इट हैपन्स ड्यू टू द वेदर ऑल्सो, बट इट ऑल्सो हैपन्स क्योंकि उनके जो गले में जो स्ट्रैप बंधा रहता है इसी कॉलर की तरह, ऑल्दो इट इज नॉट as this much big as it is on this cheetah, but उनका भी एक स्ट्रैप होता है, तो उसके अराउंड, उनके गले के नेक के अराउंड ये काफी ज्यादा इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है. एंड इफ इट गेट्स इनटू द ब्लड इट कैन कॉज सेप्सिस और इवन डेथ. और या तो इट कैन हैपन टू द बैक्टीरिया, और इट कैन आल्सो हैपन टू द tick or flea. So these all are the reasons. And the second thing is the collar. See, collar is used for monitoring the individual animals or the birds to like to track their distance, to just locate them. Because cheetah अभी introduce करा है, so we need to keep a proper surveillance on them. Due to poaching issues, due to a lot of issues that can come with it. So अब तो इतने छोटे छोटे कॉलर्स भी आ गए हैं कि we can also put it on insects. And this is the global rule, that is वर्ल्ड वाइड रूल, कि जो वेट है जानवर का और जो वेट है कॉलर का, तो कॉलर का वेट will be less than 3% of the body weight. So a lot of things come into the considerations while this, so during this, because the size of the battery is also important. A lighter one would need replacement soon. अगर कम बैटरी लगाओगे तो obviously बात है वेट कम आएगा, मगर it would need a replacement soon. So for that you will have to again tranquilize the cheetah, and then you will have to again replace it. So that is not a viable option. So but जो है 3% of body weight से कम होना चाहिए. एंड मोस्ट मॉडर्न जो कॉलर्स हैं उनका वेट अराउंड 400 ग्राम्स ही होता है. इट इज अराउंड 400 ग्राम्स ओनली. एंड चीताज के साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि उनका जो देयर कॉलर्स आर वेरी हार्ड टू फिट इन, क्योंकि आपने देखा होगा उनका फेस एज कम्पेयर्ड विद टाइगर एंड लॉयन, उनका फेस और नेक ऑलमोस्ट सेम होता है. सो इट डज नॉट गेट्स प्रॉपरली स्टक इन टू देयर नेक. दिस इज ऑल्सो द इशू. The second thing is wet collar can also worsen the situation. When the wet collar happens, अगर आप गीला ही wet पहने रहोगे कॉलर, तो obviously it adds weight into it, and it also adds the risk of infection also. There was this, yeah, I am reading from here. The cheetahs have been wearing this collar for several months in India during the dry period. जब समर के दौरान, जब बारिश नहीं थी, जब मॉनसून नहीं था, तब तक ये चीता पहने रह रहे थे, तब तक कुछ इशू नहीं था. बट when and as the monsoon came in, there have been problems, there have been injuries, there have been this problem with cheetahs. And the thing is rainfall is less in Africa, so that is why वहां पर ये इशू नहीं आता होगा, क्योंकि वहां पर भी कॉलर्स लगाए रहते हैं चीतास में. मगर यहाँ पर ये इशू आ रहा है क्योंकि वी आर अ मानसून, हमारे वहाँ पे अच्छा खासा एक मानसून आता है, सीजन आता है पूरा. तो दैट इज वाई एक वेटनेस की वजह से भी काफी इशू है. बट द थ्री पॉसिबल फैक्टर्स that are making the cheetahs vulnerable due to collars is, the pehla is the cheetah is a little more flurry compared to the coats of tiger or leopards. चीता के ड्यूरिंग अराउंड नेक और वहां पर काफी ज्यादा फर होता है एज कम्पेयर टू टाइगर और लेपर्ड्स. तो इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड इट कैन टेक लॉन्गर टू ड्राई. सो इट मीन्स जो बैक्टीरिया है और जो भी इन्फेक्शन है, इट कैन स्टे फॉर लॉन्गर ड्यू टू द फर, ड्यू टू द हेयर. So this is the first thing. The second thing was जो 3% कॉलर वेट का जो ग्लोबल रूल है, इट रिस्ट्रिक्ट द चीता वाइल रनिंग और ड्यूरिंग इट्स एथलेटिसिज्म. क्योंकि जो वेट है वो उसके साथ भी, जो अगर आपने नेक में कुछ पहना रखा है, इवन इफ इट इज 400 ग्राम्स, इट कैन बिकम 18 टाइम्स फॉर द चीता एज इट इज रिटन हियर.
In theory, it would make a 400-gram collar weight more than 7 kilos on a sprinting cheetah. And even if it is wet और भी उसके लिए परेशानी है. So this is also a problem. And the third thing is जो pathogens हैं, ऑब्वियसली चीता के भी अंदर कुछ इम्यूनिटी और ये सब चीजें होंगी, इम्यूनिटी सिस्टम होगा, मगर जो पैथोजेंस है, देर आर टू थिंग्स. या तो ये पैथोजेंस काफी न्यू हैं, दे आर नोवल एंड दे वर नॉट नोन टू द अफ्रीकन चीतास. इंडिया में आकर इनको कोई नया बैक्टीरिया या नया पैथोजन ने इन्फेक्ट कर दिया है. दीस एनिमल्स कुड बी पैथो vulnerable to certain local pathogens to which Indian tigers and leopards may be immune. और या तो ऐसा हो सकता है कि वो पहले से ही अपने अंदर डोरमेंट पैथोजेंस लेकर चल रहे हों जो कि अभी न्यू कंडीशंस में फ्लरिश हो रखे हैं. So these all were the possibilities due to which there is like a deaths are happening of cheetah, and the cheetah's future currently it looks very uncertain. क्योंकि फिर से हम इनको कैप्टिविटी में नहीं रख सकते. The project will get pushed back to a lot many years. So coming back to the captivity is not an option, but right now all the details are closely monitored by the government, and we hope that this project succeeds because a lot of time and a lot of our resources have been put onto it, but it has not yielded the results as per the expectations. Okay, the next thing is top firms pledge to watermark AI content for safety. सी क्या हुआ है कि जो टॉप कंपनीज हैं, आपने देखा होगा रिसेंटली इन न्यूज अ लॉट ऑफ एआई एंड दिस जनरेटिव एआई रिलेटेड थिंग्स आर इन न्यूज. वन थिंग इज डीप फेक्स. व्हाट इज इट? A digitally altered photo or video of a person used maliciously or to spread false information. Trump, Barack Obama. I will be attaching a video here. It is from one of my favorite creators, and he has explained deepfakes in a very precise and in a very good way. So you should be watching it. You must watch it. I will be attaching it here in the iCards. So deepfakes होता है कि जैसे ट्रम्प थे, बराक ओबामा थे, उनका फेस लेकर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना. Everything would look same, but the person would be the different. But after this CGI and all this thing, the face of the Trump might be put on. See, I have placed this here. This is the person, and this is the face of Tom Cruise. So anybody can spread the misinformation using this person will be speaking everything, but जो voice आएगी, जो face over आएगा, सब कुछ इनका आएगा, and it would look very original. तो अगर ये content create हो रहा है, अगर if this content is being created, it would be watermark. It would be written कि AI generated. Whatever AI generated, या it would be written a deep fake around here. So जिससे कि जनता को पता लग जाए कि it is a original content or a fake content. So top companies have made voluntary commitments to implement measures such as watermarking AI generated content to help make the technology safer. क्योंकि इससे काफी false information और malicious propaganda and the next year elections भी आ रहे हैं, तो इस सब से ये सब कुछ spread हो सकता है. AI can influence elections. So people will get to know if the following content is original or fake, and it can help in spotting the deep fake images or audios. है ना? And a lot of violence and lot of these problems can also come due to this. So this is AI for you, and I'll be attaching a video, and if you want to watch, you can surely be watching it. So this was it for today, and we all have done it for up till 23rd of July. So again, once again, thank you for listening, and I'll be back with the new video very soon next time. Thank you.